Hello guys, welcome back to lecture tutorial by Anisha Mangla. Today's video is on previous year's questions. I would be asking you a few questions and then giving the answers with its explanation, because what is happening again and again, the same the important writers and their works are being repeated. So I would be explaining a little bit about it so that it can be in your mind while you are attempting a question, so that you can even go for the odd man out. जब हम कोई भी आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि अगर हमें नहीं आता तो हम ऑड मैन आउट भी कर सकते हैं, राइट? तो ये आपको इससे आपको ऑड मैन आउट करने की कैपेसिटी आ जाएगी इससे आपको. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. थ्री जीनियस इज अ टाइटल ऑफ अ बुक बाय, किसने दिया था ये टाइटल? E.M. Forster, वर्जीनिया वुल्फ, जॉर्ज ऑरवेल और G.B. शॉ. तो ये जो बुक का टाइटल है ये किसका है? इट इज ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. सो दिस वर्क हैज बीन पब्लिश्ड इन 1938, June 1938, and it is a work of non-fiction, and it was initially conceived as a novel essay which would tie up the loose end left in his earlier work, A Room of One's Own. तो ये एक पार्ट है A Room of One's Own का, और ये कब पब्लिश हुआ था? 1938 में. It is a novel essay. Next question is, which of the Dickens novel attack the new poor law of 1834 in the opening chapters? अब जब आप कोई भी क्वेश्चन याद करते हो या अटेम्प्ट करते हो तो आप ये भी देख लिया करो कि उस क्वेश्चन में काफी चीजें आपको न्यू जानने को मिलेंगी. जैसे आप एक ये भी बना सकते हो कि पुअर लॉ ऑफ 1834 भी आया था डिकन्स के टाइम पीरियड में. तो हम अब ये जानेंगे तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम, ओलिवर ट्विस्ट और डम्बी एंड सन. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ओलिवर ट्विस्ट. ठीक है, तो ओलिवर ट्विस्ट में इन्होंने अटैक किया था इन द ओपनिंग चैप्टर्स. ये जो ओलिवर ट्विस्ट है, इट वाज द सेकेंड नॉवल. मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरी डिकन्स वाली जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं. He was 25 when he wrote it. In his introduction to 1907 J.M. Den edition of the novel, J.K. Chesterton, उन्होंने चेस्टरटन ने क्या बोला था? Dickens attacked the modern workhouse with a sort of inspired simplicity as of a boy in a fairy tale who had wandered about, sword in hand, looking for ogres, and who had found an indisputable ogre. All the other people of his time were attacking things because they are bad economic, or because they are bad politics, or because they are bad science. He alone is attacking things because they are bad. तो उसने particularly bad नहीं, as whole bad को focus किया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑगस्टिन राइटर्स एपिटैफ रीड वन हु स्ट्रोव विद ऑल हिज माइट टू चैंपियन लिबर्टी. तो ये जो एपिटैफ है ये किस राइटर? ऑगस्टिन राइटर. अब आपको अगर ऑप्शन आ जाते हैं, इस तरह का ऑप्शन आता है जिसमें ऑगस्टिन राइटर नहीं है, तो वो ऑड मैन आउट अपने आप ही हो जाएगा. तो इसमें अलेक्जेंडर पोप आता है, स्विफ्ट आता है, हेनरी फील्डिंग and Daniel Defoe. So these all writers are Augustan writers. So if you don't know who are the Augustan writers, you can jot it down. मैंने अपने Augustan writers वाले, Augustan age वाले जो अपने वीडियो है उसमें इनका सबका जिक्र किया है. अगर आपको Augustan writers का पता करना है तो वो आप देख सकते हैं. आंसर कौन है? स्विफ्ट. ये जो एपिटैफ है वो स्विफ्ट के ऊपर लिखा गया है. ना हु इज स्विफ्ट? स्विफ्ट जो है, he is an Anglo-Irish satirist, essayist, political pamphleteer, poet, clerk who became Dean of St. Patrick Cathedral, Dublin. Hence, his common sobriquet is Dean Swift. तो इसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसका जो एक sobriquet है
वो है डीन स्विफ्ट। इसके और भी बहुत सब्स्टिट्यूट है, वो मैं आपको जब मैं स्विफ्ट की वीडियो बनाऊंगी तब मैं बताऊंगी। Now, next question is the female quest Kesto was written by, ये किसने लिखा था? हेनरी फील्डिंग ने, स्मॉलेस्ट ने, स्मॉलेट है ये, स्पेलिंग गलत है, चार्लोट ने या एफ्रा बेन ने, BEHN, ये स्पेलिंग अगेन मिस्टेक हो गया। तो थर्ड इज द आंसर विच इज चार्लोट लेनेक्स। इट वॉज, अच्छा अब इसमें आपको ये भी पता लगेगा कि इसका अदर नेम क्या है। द एडवेंचर्स ऑफ एराबेला, इट इज अ नॉवल रिटन बाय शार्लॉट imitating and parodying the ideas of Cervantes' Don Quijote, which was published in 1752. Next question है, the main character in Google's Dead Soul is, उसका नाम बताना है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है। what is the name of the main protagonist? तो ये अगेन एक न्यू वर्क है। Oblom, Bazarov, Alisha, Shishkov. Answer is Shishkov. It was first published in 1842 and widely regarded as an exemplar of 19th century Russian literature. ये एक Russian work है। The novel chronicles the travels and adventure of Shishkov. It is also described as Piratesque novel. तो इससे आपको ये पता लगता है कि ये जो नॉवल है डेड सोल, इट इज अ पिकारेस्क नॉवल, रशियन लिटरेचर है 19th सेंचुरी का, और फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1842 में। नेक्स्ट इज सीसीस जूनो एंड पेशिक इज रोमांटिक कॉमेडी, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, मिथिकल रिकंस्ट्रक्शन और ट्रेजिक कॉमेडी। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? द राइट ऑप्शन इज ट्रेजिक कॉमेडी। दिस वर्क ऑफ सीन इज अ ट्रेजिक कॉमेडी। Now, it is a tragic comedy in 3 acts. First, you need to know that it is highly regarded and often performed in Ireland. It was first staged at the Abbey Theatre in Dublin in 1924. तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ये जो वर्क था ये कब फर्स्ट स्टेज हुआ था या कहाँ फर्स्ट स्टेज हुआ था। तो कहाँ हुआ? एबी थिएटर में। और कब हुआ? 1924 में। अच्छा, इसका जो सेटिंग है वो कहाँ की है? वर्किंग क्लास tenement of Dublin in early 1920 during the Irish Civil War. Now, this is the second of his Dublin trilogy. अभी again important question है कि इसकी जो ट्रायोलॉजी है उसमें कौन कौन से वर्क्स आते हैं। तो आप बोल सकते हो द शेडो ऑफ अ गनमैन, द प्लॉ एंड द स्टार, एंड थर्ड इज जूनो एंड पेशिक। अच्छा, ये जो स्टोरी है इट इज अबाउट द बाउल फैमिली, राइट? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एवरीथिंग आई एम टेलिंग इन दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू जॉट इट डाउन। दिसानी ऑल अबाउट एच हार्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इट इज रिटन इन द डैश स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फर्स्ट पर्सन नरेटिव मोड, पिकारेस्क मोड, naturalistic mode. The answer is stream of consciousness, right? All About Hatter is a novel or a comic farce by Disani, chronicling the adventures of an Anglo-Malay man in search of wisdom and enlightenment. As far back in 1951, Disani later wrote, I said H. Hatter was a portrait of a man, the common vulgar species found everywhere, both in East and the West. अब ये जो कोटेशन है ये भी अगेन इम्पोर्टेंट है, तो आपको एग्जाम में आ सकती है। जैसे ये लाइन उम्मीद कर दी कि I said H. Hatter, तो H. Hatter की जगह उन्होंने ब्लैंक छोड़ के आपको पूछ लिया I was a portrait of a man, ये किसके बारे में बोला है उन्होंने, राइट? तो किस बुक के बारे में बोला है? तो ये बुक के बारे में बोला है। Next question is,
The Muse of History is a classic post-colonial essay by Dash. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही अगेन आपको एक चीज जानने को मिलती है. The Muse of History ये क्या है? एक क्लासिकल पोस्ट colonial essay है, कोई नॉवल वगैरह नहीं है, ना पोएम है. इट इज एन essay एंड पोस्ट colonial है. ये किसने लिखा है? थियोंगो ने, एशबे ने, विल्सन हैरिस ने या डेरिक वॉलकोट? Answer is Derek Walcott. अच्छा, he the great Caribbean poet and Nobel laureate. Again, you need to know that Derek, is a great Caribbean poet as well as Nobel laureate who expired in March last year at the age of 87. So total tenure was 87. It was published in his collection of essay Black Mood in the Caribbean in 1974. तो ये जो essay था, ये एक collection of essays में आया था, which was written in 1974. The purpose of Walcott essay is not to give us yet another view of history, but to contest available views, put certain version of history under question. Next is the Crystal Palace, very important one, a key exhibit of great exhibition. ये किसने डिजाइन किया था? Right? Charles Darwin, Edward Moon, Joseph Paxton, Richard Owen. ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक बताए हैं, ये आपको पिछले एग्जाम्स के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं. तो आंसर इज जोसेफ पैक्सटन. Crystal Palace जो था, it was a cast iron and plate glass structure originally built in Hyde Park, London. Again, important thing, कहाँ build हुआ था, किस टाइप का था? To the house a great exhibition. अब कब हुआ था? 1851. It was designed by Joseph Paxton, the great exhibition building. This particular building was 1,851 feet long and 128 feet wide. Okay. जीन्स वाइट सरगासो सी. अब ये जो टेक्स्ट है, ये कहां पर स्थित है? सेटन है. द कॉन्गो रीजन, नाइगर डेल्टा, कैरेबियन और अफ्रीकन सिल्वाहा. The answer is the Caribbean. The setting of Wild Sargasso Sea moved from the lush tropical natural world of the Caribbean to the bleak Great House in England. The novel is set first in Jamaica at the estate called Colbery, near the former capital of Jamaica, Spanish Town. Then it moves to Grandboyes, a honeymoon house in Dominica. Finally, the third is set in the cold, dark Arctic in England. So आपको मैंने तीनों बता दिए कहाँ कहाँ स्थित है. ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो you need to answer like this. So this was all about my today's video. I hope you like it. Do subscribe if you love it and share it with your friend, because sharing is caring.